will describe the design of our WhatsApp Messenger in detail. Initially, we will explain the design of each microservice, including connection with servers, send, receive messages, and media content, and group messages. In the end, the design of each microservice is combined into detailed design of WhatsApp. Evaluation. This lesson will explain how our version of WhatsApp fulfills non-functional requirements. We will also evaluate some trade-offs of our design. And then in the last quiz, here we'll assess what we have learned in this chapter through a quiz. So ये detailed chapters हैं जिसके अंदर पहले requirements देखेंगे, high level design देखेंगे, and then further detailed design देखेंगे. First is requirements. Our design of the WhatsApp Messenger should meet the following requirements. So हमें जो सिस्टम डिजाइन करना है WhatsApp का वो इन फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए करना है. First functional requirement is conversation. This system should support one-on-one and group conversations between users. So main हमारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट के मैसेज जो है वो सेंड होना चाहिए बिटवीन, अगर दो लोग चैट कर रहे हैं तो वन ऑन वन, वरना ग्रुप कन्वर्सेशंस करते हैं. Acknowledgement. The system should support message delivery acknowledgements such as sent, delivered and read. मैसेज का स्टेटस साथ होना चाहिए कि अगर मैसेज सेंड कर दिया तो उसके ऊपर सेंड के जैसे ब्लू टिक्स आ जाते हैं, सेंड, डिलीवर्ड एंड रेड, ठीक है, तो वो आने चाहिए. Sharing. The system should support sharing of media files such as images, videos and audios. So सिर्फ के अंदर टेक्स्ट मैसेजेस नहीं बल्कि इमेजेस भी, वीडियोस एंड ऑडियो मैसेजेस भी हमें शेयर करना है, तो ये भी एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है. Chat storage. The system must support the persistent storage of chat messages when a user is offline until the successful delivery of message. इसके अंदर ये है कि अगर हमने एक मैसेज किसी को भेजा है और वो बंदा जो है वो ऑफलाइन है, उसके पास अभी मैसेज डिलीवर नहीं हुआ, तो जब तक एक ने मैसेज भेज दिया और जब तक दूसरे को रिसीव नहीं हुआ, तो हमारे सिस्टम को अपनी स्टोरेज के अंदर उस मैसेज को रखना है. हमारे पास ऐसी एक परसिस्टेंट स्टोरेज होनी चाहिए कि जो कि उस मैसेज का जो कंटेंट है वो अपने पास स्टोर कर ले जब तक के जो appropriate user है वो available नहीं. Push notifications. The system should be able to notify offline users of new message once their status becomes online. लेकिन जब एक बंदा ऑफलाइन होता है ना, जैसे मेरे पास सिग्नल नहीं आ रहे, ठीक है, तो मेरा जो मैसेज है जब मैं ऑनलाइन होगा तो मुझे पुश हो जाएंगे नोटिफिकेशंस. उससे कह रहा है कि जितने मेरे जिस टाइम में मेरा सिस्टम ऑफ था, मेरा मोबाइल ऑफ था या मेरा इंटरनेट ऑफ था, तो जितनी नोटिफिकेशन उस टाइम की थी वो मुझे जब मैं ऑन होगा तो मुझे उस वक्त डिले, मतलब उस वक्त मिलेंगी. सही. Non-functional requirements. Low latency, consistency, availability, security and scalability. लो लेटेंसी के अगर हम लोग मैसेज रिसीव कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल रियल टाइम के अंदर होना चाहिए. लेटेंसी लोएस्ट होनी चाहिए. कंसिस्टेंसी. अगर मैसेज जो सेंड हुआ है और जो रिसीव हो रहा है वो सेम होने चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए हमारा पूरा सिस्टम. अवेलेबिलिटी. द सिस्टम शुड बी हाईली अवेलेबल. ऐसा नहीं हो कि बीच में व्हाट्सएप डाउन हो जाएगा, भी हमारा सिस्टम डाउन हो जाए तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा. अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल. एंड इसके अंदर लिखा है हाउएवर द अवेलेबिलिटी कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड इन इंटरेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी. अगर हमारे पास ये ट्रेड ऑफ हो कि अगर हम लोग कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी दोनों एक साथ आ जाएंगे, मतलब अगर जैसे हमारे UDP प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोग मैसेज भेज रहे होते हैं तो उसके अंदर कभी कभी कंसिस्टेंसी नहीं रहती, लेकिन अवेलेबिलिटी हमारे पास ज़्यादा रहती है. तो हमारा मैसेज जो है वो एक्यूरेटली ट्रांसफर होना चाहिए, भले सिस्टम जो है वो थोड़ी देर के लिए अवेलेबल शो ना हो.
सो कंसिस्टेंसी ज़्यादा हमारा मेन फोकस है. Security. The system must be secure via end-to-end encryption. The end-to-end encryption ensures that only the two communicating parties can see the content of messages. Nobody in between, not even WhatsApp, should have access. एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये भी है कि हमारा जो सिस्टम है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होना चाहिए. एंड एंड टू एंड एनक्रिप्टिंग मीन्स कि दो जो कम्युनिकेशन पार्टीज हैं सिर्फ वो ही मैसेजेस को रीड कर सकते हैं. ठीक है. एंड देन स्केलेबिलिटी के सिस्टम जो है वो हाईली स्केलेबल होना चाहिए कि अगर इंक्रीज भी होता है यूजर्स के अंदर और मैसेजेस के अंदर पर डे तो वो उसको भी हैंडल कर ले. रिसोर्स एस्टिमेशन. WhatsApp is the most used messaging application across the globe. According to the WhatsApp, it supports more than 2 billion users around the world who share more than 100 billion messages each day. We need to estimate the storage capacity, bandwidth, and the number of servers to support such enormous number of users and messages. WhatsApp, no, indeed, most used platform है. According to WhatsApp itself, वो ये कहते हैं कि WhatsApp के ऊपर 2 बिलियन यूजर्स हैं जो कि WhatsApp को चलाते हैं अराउंड द ग्लोब और वो 100 बिलियन मैसेजेस पर डे जो है वो ट्रांसफर करते हैं. हमें इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, बैंडविड्थ है और नंबर ऑफ सर्वर्स हैं उनको जो है वो एस्टिमेट करना होगा. So storage estimation, as there are more than 100 billion messages shared per day over WhatsApp, let's estimate the storage capacity based on this figure. Assume that each message takes 100 bytes on average. Moreover, the WhatsApp servers keep the messages only for 30 days. So if the user doesn't get connected to the server within these days, the message will be permanently deleted from the server. So assuming that 100 billion messages जो है वो per day share हो रहे हैं और एक मैसेज जो है वो estimated 100 bytes का है on average. और हमारे पास ये भी given है कि हमारे जो सिस्टम है वो एक मैसेज को सिर्फ 30 डेज तक रखेगा अगर जो एंड यूजर है वो 30 डेज के अंदर कनेक्टेड नहीं हुआ सिस्टम से. सो वो मैसेज जो है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा. सो हमें स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 30 डेज के लिए रखनी है. सो हमने डिवाइड कर दिया 100 बिलियन पर डे और मल्टीप्लाई कर दिया एक एवरेज मैसेज से जो कि 100 बाइट्स का है. तो हमारे पास एस्टिमेट आ गया कि 10 TB पर डे हमारी डेली यूजेज है ऑन एवरेज. फॉर 30 डेज हमने उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 300 TB पर मंथ हमारी यूजेज होगी. Besides chat messages, we also have media files which take more than 100 bytes per message. Moreover, we also have to store users' information and messages metadata, for example, timestamp, ID, and so on, along the way. We also need encryption and decryption for secure communication. Therefore, we would also need to store encryption keys and relevant metadata. So, to be precise, we need more than 300 TB per month, but for the sake of simplicity, let's stick to the number 300 TB per month. इसके अंदर इन्होंने टेक्स्ट मैसेजेस के हिसाब से जो है वो कैलकुलेशन की. एक आम मैसेज जो है वो 100 बाइट्स एवरेज का होता है, बट अगर हम लोग मीडिया फाइल्स को देखें तो वो 100 बाइट्स से ऊपर की ही होती हैं ऑन एवरेज. सो उस हिसाब से अगर देखें तो हमें ज़्यादा स्टोरेज चाहिए. इसके अलावा मेटा डेटा हो गया मैसेजेस का, टाइम स्टैम्प हो गया और फर्दर इंफॉर्मेशन, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन कीज हो गई. तो इन सब की स्टोरेज के लिए भी हमें कुछ ना कुछ स्टोरेज एलोकेट करनी है. बट फॉर द सिंपलिसिटी हमने इस सब को जो है वो नेग्लेक्ट कर दिया और सिर्फ जो टेक्स्ट मैसेजेस हैं उनकी कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करते हुए
300 TB के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर इसको फर्दर स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो करंटली यहाँ पे हमारे पास इस डॉक्यूमेंट में यही लिखा हुआ है कि हमारे पास व्हाट्सएप के भी डेटाबेस के अंदर कुछ जो इंक्रिप्शन कीज हैं वो स्टोर हो रही हैं एंड लेकिन हमने इसकी स्टोरेज को जो है वो निगलेक्ट किया हुआ और सिर्फ 300 TBs को हम लोग एस्टिमेट करके आगे बढ़ रहे हैं। Then bandwidth estimation, according to the storage capacity estimation, our service will get 10 TB of data each day, giving us a bandwidth of 926 MBs per second. 10 TB अगर हमारे पास पर डे जो है वो कम्युनिकेशन के लिए हमें चाहिए, सो हम लोग इसको आई गेस 86400 जो है ये एक दिन के अंदर के सेकेंड्स है। यस मैंने सर्च किया है, ये एक दिन के अंदर 86400 सेकंड्स होता है। सर अभी हम लोग ऊपर थे। सॉरी आपकी आवाज समझ नहीं है। अभी हम लोग पिछले वाले पैराग्राफ के ऊपर। ठीक है, मेरा ख्याल था आपसे पहले के डाउन कर। आपने कुछ पूछा था या आपने कुछ? मैं वो सर्च कर रहा था कि एक दिन के अंदर शायद 86400 सेकंड्स ही होते हैं। सो ये कंफर्म हो गया कि हमने 10 TB को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास एस्टिमेट आ गया 926 MBs per second. To keep our system design simple, we have ignored the media content. So this number 926 might seem low. We also require an equal amount of outgoing bandwidth as the same message from the sender would need to be delivered to the receiver. तो यहाँ पे outgoing bandwidth अगर हम लोग देखें तो भी 926 है, इनकमिंग बैंडविड्थ को भी अगर हम लोग देखें तो भी 96 है। इन दोनों को अगर ऐड कर लेते हैं तो 1.852 GB per second बनता है and that is the total bandwidth required by WhatsApp. Yes sir, अब स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। सर काइंडली स्क्रॉल डाउन कर दें। Number of servers estimation. WhatsApp handles around 10 million connections on a single server, which seems quite high for a server. However, it is possible by extensive performance engineering. WhatsApp जो है वो 10 million connections जो है वो handle करता है on a single server, which seems quite high, but it is possible due to this thing called performance engineering. सर इसकी definition भी लिखी हुई है यहाँ पे underlined. We will need to know all the in-depth details of a system such as servers, kernel, networking, library, infrastructure, configuration, and so on. In-depth details is server key such as kernel details, networking, library, and etc. भी आगे आनी है. We can often optimize a general purpose server for this task by careful performance engineering of the full software stack. हम लोग एक जनरल पर्पस सर्वर भी स्पेशल टास्क के लिए असाइन कर सकते हैं थ्रू अ थिंग कॉल्ड परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग, जो कि यहाँ पे डिफाइन ऊपर हुई होगी. सर अगर आप इस अंडरलाइन को शो कर लें.
फंसी, सॉरी आप क्या कर पूछ रहे हो? यहाँ पे ये अंडरलाइंड है परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग. हाँ हाँ मैं कहता हूँ. For exact details, see YouTube talk titled C10M Defending the Internet at a Scale by Robert Graham. इसके अंदर डिटेल्स नहीं दी थी. Let's move to estimation of number of servers. इसके बारे में अगर किसी को पता है परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग क्या होती है तो प्लीज पार्टिसिपेंट्स में से अगर किसी को परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग के बारे में पता है. नहीं पता यार, सॉरी. Let's move on the estimation of number of servers. Number of servers कितने हमें चाहिए होंगे? हमें अगर हमने एस्टिमेट किया हुआ है तो total connections per day divided by number of connections per server. तो हमारे पास total connections per day 2 billion और अगर number of connections per server जो है वो 10 million, एक सर्वर जो है 10 billion हायर कर रहा है और total number of connections per day 2 billion है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं तो हमें 200 servers की नीड ऐसे पड़ रही है. So according to above estimates we require 200 servers. Try it out. Let's analyze how the number of messages per day affects the storage and bandwidth requirements. For this purpose, we can change values in the following table to compute the estimates. अच्छा मेरा वाला इसको ना स्किप करते हैं क्योंकि रिसोर्स एस्टिमेशन ना थोड़ा मतलब शॉर्ट ही होता है पोर्शन इंटरव्यू के अंदर, लेकिन ठीक है सर. ठीक है तो हम स्किप कर सकते हैं इसको. So हमारे पास then building blocks हमें this design of WhatsApp utilizes the following building blocks that have also been discussed in the initial chapters: a database, blob storage, CDN, load balancer, cache, and messaging queue. So यहाँ पे building blocks जो हमारे पास यूज होंगे, easy building blocks हमारे पास ऐसा हुआ. High level design. At an abstract level, the high level design consists of a chat server responsible for communication between the sender and the receiver. हमारा जो चैट सर्वर है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर. हमारा जो चैट सर्वर है वो यूजर ए और यूजर बी के दरमियान जो है वो एक एज अ सर्वर एक्ट कर रहा होगा. When a user wants to send a message to another user, both connect to the chat server. Both users send their message to the chat server. The chat server then sends the message to the other intended user and also stores the message in the database. So अगर user A को user B की तरफ message send करना है तो user A जो है वो पहले initially chat server को reach out करेगा, उसके बीच में जो भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होगा वो उसको यूज कर रहा होगा. सो वेब सॉकेट प्रोटोकॉल यहाँ पे लिखा हुआ है डायग्राम के अंदर. सो वेब सॉकेट प्रोटोकॉल के थ्रू वो चैट सर्वर को एक्सेस करेगा. चैट सर्वर जो है वो आगे यूजर बी को मैसेज सेंड करेगा और इसके अलावा वो डेटाबेस से भी कम्युनिकेट कर रहा होगा अपने मैसेज को स्टोर करने के लिए. The following steps describe the communication between two clients. User A and user B create communication channel with the chat server. सबसे पहले user A और user B जो दोनों हैं वो chat server से अपना communication बनाएंगे. User A sends the message to the chat server. User A ने अपना message जो है वो chat server पे भेजा. Upon receiving the message, chat server acknowledges back to user A. जो हमारा सर्वर है वो एक्नॉलेज कर देगा यूजर ए को कि उस तक जो है वो मैसेज सेंड हो चुका है, मींस फर्स्ट चेक यहाँ पे आ चुका है. देन the chat server sends a message to user B and stores the message in the database if the receiver's status is offline. So अगर तो यूजर B ऑनलाइन है
तो वो डायरेक्टली जो है वो यूजर बी तक मैसेज पहुंचा देगा। अगर वो ऑफलाइन है तो उस मैसेज को वो डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देगा। यूजर बी सेंड्स एन एक्नॉलेजमेंट टू द चैट सर्वर। अपॉन रिसीविंग द मैसेज यूजर बी जो है वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा सर्वर को। द सर्वर नोटिफाइज यूजर ए दैट द चैट मैसेज हैज बीन सक्सेसफुली डिलीवर्ड। सो यहाँ पे अब डबल टिक आ चुका है, मींस चैट सर्वर जो है उसने नोटिफाई कर दिया है यूजर ए को के यूजर बी तक मैसेज जो है वो पहुंच चुका है। When user B reads the message, the application notifies the chat server. यूजर बी ने अगर मैसेज पढ़ा तो वो एप्लीकेशन नोटिफाई कर देगी चैट सर्वर का, एंड देन चैट सर्वर notifies user upon the read status. So at the end चैट सर्वर जो है वो भी हमारा एक्नॉलेज कर देगा। तो इसी के अंदर ये पूरा जो है वो इनिशियली चैट मैसेज किया, एक्नॉलेजमेंट करी, सारी चीजें। ठीक है सर, ये पूरा ऊपर बता चुका प्रोसेस में। API design. WhatsApp provides a vast amount of features to its users via different APIs. Some features are mentioned below. Send message, get message or receive message, upload a message, upload a media file or document, download document or media file, send a location, send a contact, create a status. So these features जो है ये फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं व्हाट्सएप के अंदर, और अगर ये फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर इन सब की अलग अलग एपीआईज बना सकते हैं ताकि ये डिफरेंट जगहों पे होस्ट कर सकें। सो आगे जो है वो एपीआईज की डिटेल्स आ रही हैं कि अगर हम लोग सेंड मैसेज की बात करते हैं तो एक सेंड मैसेज करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी, उसके पैरामीटर्स क्या क्या होंगे। हमें एक सेंडर आईडी चाहिए होगी कि कौन मैसेज सेंड कर रहा है, रिसीवर आईडी चाहिए होगी कि कहाँ पे वो मैसेज जो है वो डिलीवर हो रहा है। द डिफॉल्ट मैसेज टाइप इज टेक्स्ट। अगर तो वो टेक्स्ट मैसेज डिलीवर कर रहा है तो यहाँ पे टाइप जो है वो थर्ड पैरामीटर इसके अंदर कि वो किस टाइप का मैसेज है। देन हमारे पास मीडिया ऑब्जेक्ट अगर है तो वो टेक्स्ट है तो एग्जैक्ट टेक्स्ट, और अगर डॉक्यूमेंट है तो उस डॉक्यूमेंट की फाइल इन बाइनरी फॉर्म। गेट मैसेज एपीआई, थ्रू दिस एपीआई कॉल एक व्हाट्सएप क्लाइंट जो है वो चेक कर सकेगा कि अगर उसके पास मैसेज अवेलेबल है तो वो उसके एप्लीकेशन में रिसीव हो जाए। अपलोड मीडिया और डॉक्यूमेंट फाइल, अगर हमें अपलोड फाइल की एक एपीआई बनानी है तो उसके अंदर फाइल टाइप होनी चाहिए हमारे पास के हम एक्सटेंशन बता दें कि किस तरह की फाइल हम लोग सेंड कर रहे हैं, और फाइल इन बाइनरी फॉर्म तो वो भी हम लोग साथ में सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे द मैक्सिमम फाइल साइज भी लिखा हुआ है सर, फाइल साइज का मैक्सिमम लिखा हुआ था। द मैक्सिमम फाइल साइज फॉर मीडिया दैट कैन बी अपलोडेड इज 16 MB while the limit is 100 MB for a document. सो यहाँ पे एक चीज ये भी लिखी हुई कि पोस्ट रिक्वेस्ट होगी क्योंकि अपलोड हो रही है, एंड दीज आर द लिमिट्स जो कि व्हाट्सएप में एग्जिस्ट करती हैं, 16 MB फॉर अ फाइल एंड 100 MB फॉर अ डॉक्यूमेंट। यस, डाउनलोड अ डॉक्यूमेंट और मीडिया फाइल। इन ऑर्डर टू डाउनलोड अ फाइल वी नीड हमारा अपना जो हमारी अपनी जो यूजर आईडी है वो हमें चाहिए होगी, एंड देन जिस फाइल को हम लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं उस फाइल की आईडी हमें चाहिए होगी। दिस इज अ यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ फाइल, इट इज जनरेटेड व्हाइल अपलोडिंग अ फाइल via upload file API call. The download file API call downloads the media file. Through this identifier, the client can find file ID by providing the file name to the server. That API call is not shown here.
जब हमने अपलोड फाइल की तो एक यूनिक आइडेंटिफायर क्रिएट हो जाएगा फाइल का ऑन डेटाबेस के, जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस से वो फाइल दोबारा से एक्सेस कर सकेंगे। वो यूनिक आइडेंटिफायर जो है वो हमारे रिसिपिएंट को सेंड कर दिया जाएगा, और अगर उसको डाउनलोड करना है तो वो इस एपीआई के थ्रू अपनी फाइल आईडी डाले और वो स्टोरेज से हमारे फाइल एक्सट्रैक्ट कर ले। Detailed design of WhatsApp. The high-level design discussed in the previous lesson doesn't answer the following questions. How is communication channel created between client and the server? How can the high-level design can be scaled to support billions of users? How the user's data is stored? How the receiver identified to whom the message is delivered? ये चंद क्वेश्चंस हैं जो कि हाई लेवल डिजाइन के अंदर आंसर नहीं हुए थे। टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस, लेट्स डीप डाइव into the detailed design. So connection with a WebSocket server is our first topic. In WhatsApp, each active device is connected with a WebSocket server via WebSocket protocol. A WebSocket server keeps the connection open with all the active online users. Since one server isn't enough to handle billions of devices, there should be enough servers to handle billions of users. The responsibility of each of these servers is to provide a port to every online user. The mapping between servers, ports, and users stored in the WebSocket manager is stored in the WebSocket manager that resides on top of the cluster of the data store. In this case, that is Redis. So हमारे पास WebSocket servers है। WebSocket जो है वो रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा होता है। अब इसके अंदर हमारे पास एक पोर्ट जो है उसको एक्सेस कर रहे होते हैं यूजर ए एंड यूजर बी फॉर कम्युनिकेशन। सो अगर यूजर ए सेंड कर रहा है मैसेज तो वो लोड बैलेंसर से गुजरते हुए उस पोर्ट को एक्सेस कर रहा होगा एंड दैट पोर्ट विल कनेक्टेड विद द यूजर बी। और जब इतनी सारी हमारे पास पोर्ट्स हैं, 200 बिलियन यूजर्स हैं आई गेस, तो हर पोर्ट को मैनेज करने के लिए हमें एक टाइप ऑफ डेटाबेस चाहिए, डेटा स्टोर चाहिए। सो उसके लिए हम लोग रेडिस यूज कर रहे हैं। सर अगर इसका रिफ्रेशर देते हैं रेडिस के बारे में, क्या की वैल्यू स्टोर है? इन मेमोरी डेटा स्टोर है और इसमें मतलब कैश के लिए यूज कर रहे हैं आप। सही। सो ये अब इस वाले सिनेरियो के अंदर हम लोग इसको फॉर मैनेजिंग ऑल द पोर्ट्स यूज कर रहे हैं। The responsibility of each of this server is to provide every port to the user. Yes. अच्छा, मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ ये रेडिस किस पर्पस में यहाँ पर यूज हो रहा है? सर यहाँ पे ये लिखा हुआ था the mapping between servers, ports and users is stored in the WebSocket manager that resides on top of the cluster of the data store. In this case, that's Redis. So मैं ये इसका assume कर रहा हूँ कि जो mapping है servers की और ports वगैरह की, ये तमाम Redis के अंदर स्टोर हो रहा है। ऐसा ही है? हाँ, मतलब यहाँ पर भी कैश के लिए नहीं है, यहाँ पर फिर वो उसकी मैपिंग को स्टोर कर रहा है। Why is WebSocket preferred over HTTPS protocol for client server communication? क्योंकि HTTPS protocol के अंदर acknowledgement वगैरह का एक बड़ा framework होता है। WebSocket जो real time connection बनाता है। HTTP does not keep the connection open for the servers to send frequent data to client. With HTTP protocol, a client constantly request update from the user, commonly
called polling, which is resource intensive and causes latency. WebSocket maintains persistent connection between the client and the server. This protocol transfers data to the client immediately whenever it becomes available. It provides a bidirectional communication called bidirectional connection, used as a common solution to send asynchronous updates from the server to a client. सर इसके अंदर HTTPS प्रोटोकॉल के बारे में बात हुई है, अगर तो यहाँ पे हम लोग इसका रिफ्रेशर दे सकते हैं कि HTTP प्रोटोकॉल के अंदर और WebSocket प्रोटोकॉल के अंदर क्या डिफरेंस है, इससे बहुत अच्छा होगा। ये मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन HTTP जैसा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है ना, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट देता है और वो HTTP रिक्वेस्ट होती है, और S का मतलब है सिक्योर, मतलब HTTP के अंदर HTTPS एक प्रोटोकॉल होता है जो कि सिक्योर कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। यस, इसके अंदर डिटेल के अंदर अगर जैसे HTTP पर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जाती है, फिर एक्नॉलेज होता है, सबसे पहले DNS के साथ फिर रिजॉल्व हो रहा होता है, उस बारे में सर। जी हाँ, वो DNS वाले पे यहाँ पर बात नहीं की, ये कह रहा है कि यहाँ पर जो क्लाइंट है या जो यूजर है वो कनेक्टेड है थ्रू WebSocket में कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ हुआ है, ठीक है। मेंटेन ए परसिस्टेंट कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, जो कि दोनों ट्रांसफर कर सकते हैं बाई डायरेक्शनली, क्योंकि इंफॉर्मेशन जानी भी है और वहाँ से एक्नॉलेजमेंट आनी भी है। तो पहले मेंशन किया था इसने कि जो एक्टिव यूजर्स हैं उनके साथ वो WebSocket कनेक्शन मेंटेन करेगा, ठीक है, मतलब परसिस्टेंट कनेक्शन है। इस केस में वो रिक्वेस्ट जाएगी, उसके रिप्लाई आएगा, और इसे पोलिंग कह रहा था। तो जो ये WebSocket है ये बेसिकली पोलिंग नहीं है, बल्कि एक कनेक्शन है, लाइव कनेक्शन आप कह लें या एक्टिव कनेक्शन जो भी कह लें, परसिस्टेंट कनेक्शन है जो कि क्लाइंट और सर्वर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के लिए ऑब्वियसली कुछ वो होगा, प्रोटोकॉल होगा कि क्लाइंट या जो है सर्वर के साथ कनेक्ट हो गया थ्रू WebSocket, लेकिन उसके बाद वो आपस में कम्युनिकेट मतलब रियल टाइम उसमें करेंगे। मतलब ये कि जब भी उनके पास इंफॉर्मेशन होगी तो वो उस परसिस्टेंट कनेक्शन को यूज करके बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन करेंगे। यस सर, इन प्रोटोकॉल्स को डिटेल के ऊपर देखते हैं। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने जितना देखा था, इसके अंदर जैसे HTTP प्रोटोकॉल है, तो जैसे अगर एक यूजर सेंड कर रहा है रिक्वेस्ट किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, तो वो पहले DNS के ऊपर जाती है, फिर अगर एड्रेस उसके पास है तो वो पहले एक रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर उसको जो है वो वापस एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगी, फिर देन वो रिक्वेस्ट करके फाइल को एक्सेस कर रहा होगा। बट अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, WebSocket सर्वर्स की बात करते हैं, तो WebSocket सर्वर के अंदर सिर्फ एक दफा कम्युनिकेशन सॉकेट जो है वो ओपन होता है, मींस यूजर ने जो है वो उस पोर्ट के ऊपर एक्सेस किया, एक्नॉलेजमेंट मिल गई और अब कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश हो गया। तो अब अगर यूजर कोई भी मैसेज जो है वो सेंड कर रहा है ना सर्वर को, उसको दोबारा से कनेक्शन ओपन करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली उसी जो हमारा टाइप ऑफ टनल क्रिएट हो गया उसके अंदर मैसेजेस जो है वो सेंड करता रहेगा और रिसीव करता रहेगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन WebSockets, कि उसके अंदर एक रियल टाइम कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, लेकिन जब हम लोग HTTPS की बात करते हैं, जैसे हमारी नॉर्मल वेबसाइट्स एक्सेस हो रही होती हैं, तो उसके अंदर हर बार अलग रिक्वेस्ट जाती है और अलग एक्नॉलेजमेंट आती है, उसकी अलग जो है वो उसका रिस्पॉन्स आता है। सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसमें बस सिर्फ एक चीज़ और ऐड कर लें कि यहाँ पर एक चीज़ पोलिंग का जिक्र था, तो जो HTTP होगा ना वो पोलिंग होगी, कि वो पूछ रहा है कि मेरे लिए कोई मैसेज है तो बताओ, ठीक है, और फिर सर्वर को आप दे, तो उसमें डिले आएगा। या अगर उसको रियल टाइम एक्सपीरियंस करना है तो उससे बहुत फास्ट पोलिंग करनी पड़ेगी कि हर 1 सेकंड के बाद वो पोल कर रहा हो, ठीक है, हर सेकंड के बाद वो रिक्वेस्ट भेज रहा हो और फिर तो वो अननेसेसरी रिक्वेस्ट जा रही होंगी और उसके रिप्लाई में फिर वो रिप्लाई आ रहा होगा। तो उसके कंट्रास्ट में ये जो है ये किस्म का पुश मैकेनिज्म कहेंगे थिंग है कि एक कनेक्शन बन गया, जिसके पास डेटा होगा वो उस कनेक्शन पे पुश कर देगा।
तो वो ज्यादा क्लोज टू रियल एक्सपीरियंस होगा, Yes. रियल टाइम एक्सपीरियंस. Send or receive messages. The WebSocket manager is responsible for maintaining a mapping between an active user and a port assigned to the user. Whenever a user is connected to another WebSocket server, this information will be updated in the data store. So हमारे पास जो Redis का data store है उसके अंदर स्टोर हो रहा होगा कि कौन सा यूजर किस एक्टिव पोर्ट के ऊपर जो है वो कनेक्टेड है. मींस सेशंस जो है वो हमारे पास मैनेज्ड हैं इन द डेटाबेस. A WebSocket server also communicates with another service called message service. Message service is a repository of messages on top of the Manasseh database cluster. WebSocket जो है वो एक और सर्विस के साथ कम्युनिकेट कर रहा हुआ है, दैट इज मैसेज सर्विस, which is a repository on top of Manasseh database cluster. So it acts as an interface to the Manasseh database for other services interacting with databases. It is responsible for storing and receiving messages from Manasseh database. It also deletes messages from the Manasseh database after configurable amount of time, and it exposes APIs to receive messages from various filters such as user IDs, message ID, and so on. So I guess ये data जो हमारे पास text को store कर रहा है for the 30 days जो कि initially बताया था कि अगर user जो 30 days से connected नहीं होता तो हमारे पास database में store होना होते हैं वो messages, तो वो इस सर्विस के अंदर Manasseh डेटा स्टोर के अंदर सेव हो रहे होते हैं. आई गेस यही है सर. इसके अंदर क्लस्टर कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्लस्टर से तो लग रहा है कि एक वो नहीं है बल्कि मल्टीपल है. ये मेंशन किया हुआ है इसमें, इसको अगर आप पढ़ लें. As mentioned earlier, WhatsApp stores messages for a short period. Therefore, we need database capable of storing ever-increasing data and should support frequent delete operations. For this purpose, WhatsApp uses Erlang-based distributed database management system called Manasseh. This DBMS provides the following benefits. As discussed earlier, कि WhatsApp को जो है वो मैसेजेस स्टोर करना है जब तक यूजर अवेलेबल नहीं है, तो हमें एक ऐसा डेटाबेस चाहिए जो कि बहुत जल्दी मैसेज को डिलीट ऑपरेशन भी परफॉर्म करवा सके. क्योंकि हमें जैसे ही अगर यूजर एक्टिव हुआ फॉर एग्जांपल 3 मिनट बाद, तो हमें फौरन उस मैसेज को डिलीट भी करना. सो हम उसके लिए Erlang बेस्ड एक DBMS यूज करते हैं which is known as Manasseh, and this database provides the following benefits. Real time key value lookup provide करता है, means searching fast है इसके अंदर, high fault tolerance है, dynamic reconfiguration है, and complex objects. I guess complex objects को भी ये handle कर पाएगा, store कर पाएगा. It acts as an interface to the Manasseh database for other services interacting with the database. It is responsible for storing and receiving messages. ये मैंने मिनिमाइज कर दिया इसका ना, ये आप यहाँ से पढ़े. It acts as an interface to the Manasseh database for other services interacting with database. It's responsible for storing, retrieving messages from Manasseh database. It's also delete the message from Manasseh database after a configurable amount of time, and it exposes APIs to receive messages from various filters such as user ID, message ID, and so on. ये वही चीज़ है जो अभी थोड़ी पहले देखी थी कि इसके अंदर जो है वो स्टोर हो रहे होंगे मैसेजेस जब तक यूजर अवेलेबल नहीं है. Now let's assume that user A wants to send a message to user B. As shown in the figure above, both users are connected to different web sockets.
the system performs the following steps to send a message from user A to user B. हम सर जब भी ऐसे स्टेप्स आते हैं नीचे डायग्राम जरूर आती है, देखें इसके साथ डायग्राम है नहीं है, तो हमारे पास स्टेप्स वैसे गिवन है कि यूजर ए और यूजर बी ये जो है ऊपर वो है। अलग अलग डायग्राम ऊपर थी और उसकी एक्सप्लेनेशन नीचे। दो यूजर्स हैं और ये वेब सॉकेट सर्वर से कनेक्ट हो रहे हैं थ्रू लोड बैलेंसर, और फिर लोड बैलेंसर अदर साइड पे वेब सॉकेट मैनेजर। यही तमाम डिटेल्स जो है वो हमारे पास इसके अंदर लिखी होंगी कि यूजर ए कम्युनिकेट्स विद द कॉरेस्पॉन्डिंग वेब सॉकेट सर्वर व्हिच इज कनेक्टेड। यूजर ए अपने वेब सॉकेट सर्वर के साथ कनेक्टेड होगा। The WebSocket server associated with user A identifies the WebSocket to which user B is connected via WebSocket Manager. If user B is online, the WebSockets Manager responds back to user A's WebSocket server that user B is connected with WebSocket server. So then हमें ये आइडेंटिफाई करना है यूजर बी को अगर मैसेज सेंड करना है कि यूजर बी कौन से WebSocket सर्वर के साथ कनेक्टेड है, तो वो आइडेंटिफाई करता है। अगर तो यूजर भी ऑनलाइन है, मींस एक्टिवली कनेक्टेड है, तो जो हमारा WebSocket मैनेजर है वो रिस्पॉन्ड कर देगा यूजर ए को कि वो इस WebSocket पोर्ट के साथ जो है वो कनेक्टेड है। Simultaneously, the WebSocket server sends the message to message service and is stored in the Manasseh database where it gets processed in first out order. As soon as these messages are delivered to the receiver, these are deleted from the database. At the same time, WebSocket server जो है वो मैसेज सेंड करेगा सर्विस को जो कि Manasseh डेटाबेस के अंदर स्टोर हुई है इन द फर्स्ट आउट ऑर्डर, और जब तक वो यूजर अवेलेबल नहीं है तब तक वो वहाँ पे स्टोर्ड रहेगा। अगर तो वो अवेलेबल हो जाता है तो सिस्टम से वो मैसेज डिलीट हो जाता है। Now user A's WebSocket server has information that user B is connected with its WebSocket server. The connection between user A and user B gets started via their WebSocket servers. So सबसे पहले हमने मेक श्योर कर लिया कि हमारा जो मैसेज है वो सेफ है डेटाबेस के अंदर। हमने पहले ही मैसेज जो है वो सेव कर लिया, एंड नाउ के जब कंफर्मेशन आ गई कि यूजर बी कौन से WebSocket सर्वर से कनेक्टेड है, तो जो कम्युनिकेशन है वो बन जाएगी बिटवीन यूजर ए एंड यूजर बी। If the user B is offline, the messages are kept in the Manasseh database. Whenever they become online, all the messages intended for user B are delivered via push notification. Otherwise, these messages are deleted permanently after 30 days. So ये messages तो stored थे ही Manasseh database में। जब भी user B जो है वो online होगा, अगर तो वो offline था, तो ये messages via push notification बस ये आपकी आवाज नहीं आ रही, या तो मेरा नेट इशू कर रहा है कोई। आपको मेरी आवाज आ रही? डिस्कनेक्ट हो गया था। आप कर लें कंटिन्यू, कोई इशू नहीं है। कहाँ तक मैंने जो लास्ट टाइम पढ़ा था? आपने ये पढ़ लिया था यहाँ तक ना? मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तक हम एंड कर लें इस जगह तक। ठीक है। Consider a case where there can be a continuous conversation between users. This way, many calls are made to the WebSocket server to minimize latency and reduce number of these calls to WebSocket Manager. Each WebSocket server cache is the following information. So WebSocket server के अंदर हमारे पास कैशे के अंदर कुछ information सेव होनी चाहिए ताकि
जो हमारी कॉल्स हैं जो कि आइडेंटिफाई करने के लिए यूज हो रही है कि यूजर एक कौन से वेब सॉकेट सर्वर के साथ कनेक्टेड है, यूजर बी कौन से वेब सॉकेट सर्वर के साथ कनेक्टेड है, एंड अगर कंटिन्यूअस कन्वर्सेशन हो रही है बिटवीन टू यूजर्स तो उनको ज्यादा कॉल्स नहीं करनी पड़े और थस लेटेंसी जो है वो रिड्यूस हो सके. सो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी सेव्ड. If both users are connected to the same server, the call to the WebSocket manager is avoided. अगर तो कनेक्शन जो है वो रियल टाइम चल रहा है, मींस दोनों जो है वो सेम सर्वर के साथ कनेक्टेड है, तो WebSocket पे कॉल नहीं जानी चाहिए. It caches information of recent conversations about which user is connected to WebSocket server, which WebSocket server. So कैशे के अंदर ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो के यूजर किस WebSocket सर्वर के साथ रिसेंटली कनेक्टेड था. So these are the two things जो कि स्टोर होनी है. ठीक हो गया, तो यहाँ क्विज से कल स्टार्ट करते हैं. ठीक है, चलो पॉइंट टू पॉइंटर. ठीक है, अगर करना है तो कर ले, नहीं तो टाइम तो हो गया. ठीक है, अगर टाइम ओवर हो गया तो यहाँ से और भी आगे होगा बहुत कुछ. सही, चलें ठीक है, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच.